हेलो एवरीवन, मेड इजी स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं 20+ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो एमसीक्यूज है ये कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ बनाए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। सो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? So right answer is option number C, Dr. Bhimrao Ambedkar. Question number 2, how many members of the Constituent Assembly signed the Constitution of India? Right answer is 284, means option number A. Then question number 3, the permanent president of Constituent Assembly was? Right answer is option number B, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो इसके टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो किसको बनाया था? BN राव को। क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ नॉन कांग्रेस मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? राइट आंसर इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी मेंबर्स वर assigned by the cabinet mission plan constituent assembly? Right answer is 296, option number D. Question number 6, what was the duration in the making of Indian constitution? Very easy question. How many years and months and days? So answer is 2 years 11 months and 18 days. Question number 7, which of the following gave the idea of Constituent Assembly for India? Right answer is Cabinet Mission Plan, option number C. Question number 8, the Constitution of India was enacted on 26 November 1949 by the? Right answer is President of India, option number C. Question number 9, when did the Indian Constituent Assembly meet for the first time? Right answer is option number C, 9 December 1946. Question number 10, the Constitution of India was completed by which of the following dates? Right answer is option number B, November 26, 1949. Question number 11, the proposal for framing of the Constitution of India by an elected Constituent Assembly was made by? Right answer is option number D, British Cabinet Delegation. Question number 12, who was the following has stated that the Constitution has not been set in a right mold of a federalism? Right answer is option number A, D.D. Basu, Durga Das Basu. Question number 13, who of the following moved the objective resolution in the Constituent Assembly? Right answer is option number B, Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India. Then question number 14, the number of members included in the Constitution Drafting Committee was? How many members? 7 members. And name of members, first is Dr. Bhimrao Ambedkar, then second N. Gopal Swami Iyengar, third Aladi Krishna Swami Iyer, then fourth K. M. Munshi, then fifth Muhammad Sadullah, then sixth B.L. Mittar एंड 7 DP खेतान। देन BL मित्तर की जब डेथ हो गई थी तो N माधवराव को बनाया गया। जब DP खेतान की डेथ हो गई थी TT कृष्णाचारी को मेंबर बनाया गया। सो टोटल 7 मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। क्वेश्चन नंबर 15, ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, सर BN राव, एडवाइजर to the Constituent Assembly. Question number 16,
Consider the following statement regarding the composition of the Constituent Assembly. Right answer is third only. The total strength of the Constituent Assembly was 389. So right answer is option number C. Question number 17. Match list first with list second and select the correct answer using the codes given below. Firstly, Steering Committee, Fundamental Rights Subcommittee, Union Constitution Committee, Provincial Constitution Committee, and Chairman Sardar Vallabhbhai Patel, Dr. Rajendra Prasad, J.B. Kripalani, and Jawaharlal Nehru. Steering Committee, Dr. Rajendra Prasad. Fundamental Rights Subcommittee, J.B. Kripalani. Union Constitution Committee, Jawaharlal Nehru, and Provincial Constitution Committee, Sardar Vallabhbhai Patel. So right answer is option number A. A match with second, B match with third, C match with fourth, and D match with first. Question number 18. Consider the following statement. Dr. Sachidanand Sinha was elected as the provisional president of the Constituent Assembly. Second statement. S.C. Mukherjee was elected as the vice president of the Constituent Assembly. अब हमें देखना है कि दोनों स्टेटमेंट राइट है या ओनली वन स्टेटमेंट राइट है. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज इलेक्टेड एज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट स्टेटमेंट है. देन H.C. मुखर्जी वॉज इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये भी राइट स्टेटमेंट है. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ फर्स्ट एंड second. Question number 19. Match list first with list second and select the correct answer using the codes given below. First Vice President of Constituent Assembly हमने अभी अभी पढ़ा H.C. मुखर्जी. सो फर्स्ट मैच हो जाएगा फोर्थ से. सेकेंड ओरिजिनली द ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ ड्राफ्ट कमेटी, सो के एम मुंशी, ये इसका रिलेटेड टू बी मैच विद थर्ड. देन मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटिंग राजस्थान प्रिंसली स्टेट्स, तो ये इससे रिलेटेड होगा, ये हो जाएगा वीटी कृष्णामाचारी, ऑप्शन सी मैच विद फर्स्ट. देन चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जहाँ पर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन आए तो राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू, तो ये मैच हो जाएगा डी से. तो ए मैच विद फोर, बी मैच विद third, and C match with first, and D match with second. So right answer is option number B. Next question, question number 20. Consider the following statement about the judicial system introduced by the British in India. Statement पढ़ते हैं. It judicially unified India. Then second, the British established a new system of law through the process of enactment and relevant interpretation of customary laws. Then third, in general the British tended to avoid the customary laws of India. इसमें जो right statement है वो है फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो राइट है, सेकेंड भी राइट है, थर्ड रॉन्ग है. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A. Question number 21. Which of the following statement about the formation of Constituent Assembly are correct? The members of Constituent Assembly were chosen on the basis of provisional election of 1946. Right statement. So हम इसके आगे right लगा लेते हैं. Then second statement, the Constituent Assembly didn't include representative of the princely state. ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. देन द डिस्कशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय पब्लिक, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है. देन फोर्थ, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव पार्टिसिपेशन सबमिशंस वर सोलिसिटेड फ्रॉम द पब्लिक, ये राइट स्टेटमेंट है. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट एंड फोर. Question number 22. The Constituent Assembly of India convened
to prepare the Constitution of India, appointed a subcommittee headed by Gopinath Bardolai. Which of the following recommendations were made by the committee? Options देख लेते हैं. Firstly, statement देख लेते हैं, then after option देखते हैं. Fifth schedule for the northeast frontier tribal and excluded areas. This is wrong statement. Constitution of district council in all autonomous district of Assam, ये भी wrong statement है. Sixth schedule for the northeast frontier tribal and excluded areas, wrong. And last is demarcation of territories in northeast India, right statement. So right answer is only 4, option number D.